बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टारगेट पेपर फॉर सेकेंड ईयर इंग्लिश। अब चाहे स्टूडेंट्स साइंस के हों, होम इकोनॉमिक्स के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स ग्रुप के हों या मेडिकल टेक्नोलॉजी के हों, जितने भी बच्चे सेकेंड ईयर इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। और ये वीडियो आपको रास्ता दिखाएगी कि आपने अपनी तैयारी शुरू किस तरह से करनी है। सेकेंड ईयर में चूंकि बहुत ज्यादा लिटरेचर है और जब बच्चे प्रिपरेशन करने बैठते हैं पेपर्स के दिनों में तो उन्हें समझ नहीं आ पाता हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। इसको थॉरली देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सबके काम आने वाली है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को सेक्शन बी से। व्हाई नॉट सेक्शन ए? क्योंकि सेक्शन ए जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड एरिया है। आप जिन लोगों ने लेक्चर रेगुलरली सुने हुए हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी। और अगर किसी ने नहीं की हुई तैयारी क्लास लेवल पर तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस, तमाम तर चैप्टर्स की, तमाम तर पोएम्स की और नॉवेल की वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। आप उसे देख सकते हैं, इवन उसको देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सुन के सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। और उसके अंदर जो ओवरऑल एमसीक्यूज हैं चैप्टर पोएम से रिलेटेड और नॉवल से रिलेटेड वो तो है ही हैं, साथ में उसमें पास पेपर्स भी हैं, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। शुरू करते हैं सेक्शन बी को और पोएट्री सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सेवन एजेस ऑफ मैन। अब इस पोएम से आपके पास टारगेट होना चाहिए कि ये 6 सवाल तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके जाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद विलियम शेक्सपियर दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज? What do the word exit and entrances mean in the 7 ages of man? What is the behavior of a man in the 3rd stage according to Shakespeare? Give description of the 4th stage as given in the poem. What is the behavior and state of a man in the 5th stage of his life? अच्छा देखें, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। जैसे 5th स्टेज ऑफ लाइफ पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताएं जस्टिस का एज कौन सा है। तो थोड़ा सा उन चीजों के लिए रेडी रहिएगा। वर्ड्स को आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लास्ट स्टेज ऑफ अ मैन फ्रॉम द व्यू ऑफ शेक्सपियर। इस क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सेकंड चाइल्डिशनेस ऑफ अ मैन्स लाइफ। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपको लास्ट स्टेज ही लिखना है। तो वर्डिंग चेंज होती है, देख लिया करें कि किस तरह से उसे आंसर करना है। समटाइम्स हमें आंसर पता होता है लेकिन हम क्वेश्चन में चूंकि वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं, उसको पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। सेकंड पोएम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैंपेन्स अपराइट मैन, हाईलाइट एटलीस्ट 3 क्वालिटीज ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। अब जब आप कैंपेन्स अपराइट मैन की बात कर रहे हैं कि उसको डिस्क्राइब करें तो उसमें उसकी क्वालिटीज ही बताई गई हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर बता दिया कि आपने 3 क्वालिटीज बतानी है, तो आप पहले वाले क्वेश्चन में भी उसको थोड़ा सा रिफाइन करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एन अपराइट मैन कंसीडर दिस वर्ल्ड? हाउ डज एन अपराइट मैन सीक गाइडेंस? व्हाट मेक्स द कैंपेन्स मैन बोल्ड एंड करेजियस? अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी भी पोएम्स हैं उनके एमसीक्यूज आप देख सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें और उसे सुन सकें, तो आपकी स्क्रीन की टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है अब, उसमें आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है तमाम तरह सेकेंड ईयर पोएम्स के एमसीक्यूज की, अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर्स। सैमसन एगोनिस्टस के क्वेश्चंस देखते हैं। हु वाज सैमसन एंड हाउ वाज ही कैप्चर्ड बाय Philistines? What does Samson plan to do while performing for the Philistine leaders? What request did Samson make to the guide and why? Who were assembled at the temple in the poem Samson Agonistes? How did destruction fall upon them? How and why did Samson destroy his enemies? Innocent man, what is the perception of the poet about future? The blindness of future is a blessing
of God or a curse, explain with reference to the poem An Assured Man. ये दोनों ही question almost same है. What are the two blessings given to a man by God? ये भी पहले दो सवाल से रिलेट करता है, तो अगर आपने एक सवाल कर लिया तो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे उसमें. What does Pope say about death in An Assured Man? What message do we get from the poem Lines from An Assured Man? The Solitary Reaper, इसमें आपसे पूछा जा रहा है what has inspired Wordsworth to compose the Solitary Reaper. ठीक है ना. उसके बाद next question है who was the Solitary Reaper and what was she doing in the cultivation field? Why has God kept the future hidden from all his creature? What does Wordsworth guess about the theme of the girl's song in the poem? What does the poet William Wordsworth mean by the given lines? Explain in your own words. The music in my heart I bore long after it was heard no more. Music when soft voices die. इस poem से हमारे पास है questions. How does Shelley convey the idea that true love never dies in his poem Music when soft voices die? How does Shelley illustrate that beauty is eternal? What does Shelley want to say in his poem Music when soft voices die? What is the main idea discussed in the poem Music when soft voices die? ये third or fourth question भी almost same है. Endymion, what things of beauty did Keats find most inspiring in the poem Endymion? Second question is what is the effect of beauty in man's life? Describe the splendor of the doom. What is the theme of the poem Endymion? Say not the struggle, not avail it. What is the effect of a struggle in our personal life as described by Arthur Hugh Clough in his poem Say not the struggle, not avail it. Say not the struggle, not avail it is a poem which reflects hope. Comment. What message has been conveyed in the poem? Second or third भी almost एक जैसे ही हैं. Discuss one of the images used by the poet in the poem. What are the three examples that the poet gives in the poem? अब ये जो fourth वाला question है, उसके अंदर fifth से उसका जवाब बन सकता है, क्योंकि तीन images दी हैं, तीन examples दी हैं और वही तीन images हैं. उनमें से एक image को जो है आपने describe करना है, तो fifth और fourth भी almost similar है. Ulysses. Describe how Ulysses inspires his sailors to embark on a new adventure. What are Ulysses' expectation and fear about his last voyage? उसके बाद next है what is the message of the poem Ulysses? What message did Ulysses give to his sailors? Explain the assertion that Ulysses is a symbol of human spirit. प्रोज सेक्शन में आ गए और प्रोज सेक्शन के अगर आप तमाम तर एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तमाम चैप्टर्स के अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर्स, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन आ रहा है. अब उसके अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है तमाम तर प्रोज के चैप्टर्स की, उनके ओवरऑल एमसीक्यूज की अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर्स. तो आप उसे क्लिक करके वन बाय वन तमाम तर चैप्टर्स को सुन भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है. तो शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है जो कि प्ले है बेसिकली वो है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब. अब 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट मोटिव हैज द मैन फॉर मर्डरिंग मिसेस जूडी ओकेंटब? व्हाई डिड द मीटिंग विद द कोरियन गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लिव? Explain the importance of the label on Mrs. Ocantab's suitcase. Why does she hide it? Why was Mrs. Ocantab sentenced 18 months in prison? Discuss the end of the play 20 minutes with Mrs. Ocantab. Discuss the justification of Mrs. Ocantab's murder. तो ये 6 सवालात हैं जो कि आपने इस प्ले से करने हैं. चलते हैं आगे की तरफ. Reflections on the reawakening East. Why is it insular for European historians to term the centuries after the fall of the Roman Empire the Dark Ages? How is traditional culture threatened in the age dominated by science and machinery? What, in author's opinion, should Asian countries accept from the West and what should they reject? What are Russell's
desires and hopes for the Asian countries. ये third question और fourth question almost जो है वो same है. Fifth question है, why does the author consider that it is useless to resist industrialization? What suggestions does Bernard Russell give to the Asian nations for their progress? Third chapter है, the day the dam broke. When and where did the rumor about the breaking of the dam spread? How long did the panic last, and how was it ordered restored? Its order restored हो गई है. How did Thurber's mother cope with this situation in the day the dam broke? What causes the lieutenant colonel for the infantry to lead a fleeing company of 300 persons? Describe the humorous incident of Dr. Mallory in the day the dam broke. Why does Dr. Mallory refuse to talk about the incident in the lesson, the day the dam broke? What was the mob mentality presented in the story, the day the dam broke? Next chapter देखते हैं. That's Pakistan and the modern world. What does Liaquat Ali Khan state the real meaning of freedom for the common man? According to Liaquat Ali Khan, what are the main demands of freedom? What main differences did Liaquat Ali Khan point out between Hindu and Muslim beliefs? What does Liaquat Ali Khan put forward as two main duties of the Western world? What initial problems were faced by Pakistan in its early years, as mentioned by Liaquat Ali Khan in his speech? Our administrative machinery had to be built from scratch. What does Liaquat Ali Khan mean by these words? अच्छा, जब आप इसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, आप इतने जल्दी लिख तो नहीं सकते. आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और इजीली आपको स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप उसको चाहे तो कॉपी करें या चाहे डायरेक्टली उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें. Act 3 of the Silver Box, ये एक प्ले है हमारे प्रोज की बुक से. उसके अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन है, call this the justice. Explain this speech of Jones with reference to Act 3 of the Silver Box. Was justice done to the family of Mr. James Jones? Explain. What system has been criticized in the lesson Act 3 of the Silver Box? T capital होना चाहिए था. What crime had Jones committed in the Silver Box? What is the role of Brathwaite in the play The Silver Box? What led the constable to arrest and charge James Jones as well as Jane Jones? The world as I see it. What is Einstein's attitude to property, outward success and luxury? What is Einstein's opinion of war? On what grounds does Einstein put the individual before the state? What in brief is Einstein's attitude to leadership? What does Einstein comment on truth, beauty and goodness? What are Einstein's view about democracy? Last chapter है Prose, the devoted friend. और इसमें हमसे पहला क्वेश्चन है, what happened to Hans when he went to fetch the doctor? Who is fair weather friend, Hans or Miller? State with reasons. Comment on Miller's claim to have been Little Hans' best friend. How does Miller justify his not asking Hans to share of his good things during winter? Why was Hans unable to look after his garden? How does Hugh the Miller deceive little Hans in the lesson The Devoted Friend? अगली स्लाइड में और अगली स्क्रीन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवेल सेक्शन. अच्छा, याद रखिएगा नॉवेल सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, 21-22 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे. अच्छी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि जो टारगेट पेपर में आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको आप सॉल्व करें. इन केस अगर आप 10 ईयर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो शायद उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिले, तो ज्यादा मुनासिब होगा कि आप इसको तहम्मुल के साथ टारगेट बनाएं कि भाई मैंने फर्स्ट डे जो है तकरीबन कुछ 6 सवालात या 5 सवालात मैंने प्रिपेयर करने हैं या 10 करने हैं, और इसे डेली बेसिस पर आप इसकी तैयारी करें तो होपफुली कि आपका नॉवेल सेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा. अच्छा, रुडोल्फ रेसेंडल से रिलेटेड मैंने कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग कर दी, क्योंकि मेरे नोट्स में भी जो क्वेश्चंस हैं वो कैरेक्टर से रिलेट करके बनाया गया है.
उससे फायदा ये होगा कि आपको जो है क्वेश्चंस ढूंढना आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से इसकी डिवीजन की है, कैरेक्टर वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपके लिए आसानी हो। पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ डिड रेसेंडल meet the king for the first time? How is Rudolf Rassendyll trapped to impersonate the king? Why was it necessary to impersonate the king in the coronation ceremony? How did Rassendyll manage to escape from the summer house? Give a comparison between Rassendyll and King Alsberg. Write the selflessness and self-sacrifice of Rudolf Rassendyll. Whom do you think the most lovable and sympathetic character in the novel The Prisoner of Zenda? Give reasons. आप इसके अंदर किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां और जान खतरे में डाली रुडोल्फ रेसेंडल ने ही, तो आप यहाँ पे रुडोल्फ रेसेंडल के बारे में ही लिख दीजिएगा, तो आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो जाएगा। State what makes Rassendyll a more efficient king than Alberg. State 3 qualities of Rudolf Rassendyll. What were the steps taken by Rudolf Rassendyll for the liberation of Rudolf Alberg? Princess Flavia से related question है यहाँ पे कि Princess Flavia is an ideal heroine. Comment. How did Princess Flavia react when she came to know the truth of the fake king? How did Princess Flavia prove herself loyal to her country and family? Compare and contrast the two women characters in the novel The Prisoner of Zenda. Black Michael and accomplices, यानी कि Black Michael और उसके जो साथी थे उससे related questions हैं यहाँ पे। Why could not Michael succeed in his conspiracy to become the king of Britannia? Black Michael is a detestable character. Comment. Why was Duke Michael not eligible for the crown of Britannia? What was the purpose of the gang of the Six? What was Black Michael's plan in case any attempt was made to rescue the king? Why did Rupert kill his own master? Antoinette de Maubach's related question है, why did Antoinette de Maubach help Rudolf Rassendyll? Out of jealousy. What role did Madame de Maubach play in the story The Prisoner of Zenda? और फिर ये इनके dialogue से related एक question है, say I'm Christian or say I'm jealous, my God, shall I see him marry her? Discuss the above statement with reference to the novel The Prisoner of Zenda. Why does Lady Maubach write a letter to Rassendyll? Highlight two significant qualities of Antoinette de Maubach. Antoinette de Maubach, English pronunciation है इनके नाम की, French pronunciation इसकी थोड़ी different है, चूंकि novel English में है तो इसकी English pronunciation ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। How did Madame de Maubach become the cause of Black Michael's murder? Who was the prisoner of Zenda? Everyone knows it was Rudolf Alberg. And why was he imprisoned? Do you consider Rudolf Rassendyll the best king of Britannia? Justify your answer with reasons. Compare and contrast the characters of Rudolf Alberg and Black Michael. Give a brief description of the loyalty and wisdom of Colonel Sapt. अगर आप चाहते हैं कि आप नॉवेल के भी जनरल एमसीक्यू सॉल्व करें along with the past papers, तो उसकी वीडियो अपलोड करूंगा मैं later on, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन है उसके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते होंगे। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक नॉवेल के एमसीक्यूज अपलोड नहीं हुए हैं, आगे जाके जरूर हो जाएंगे। रुडोल्फ एल्बर्ग एंड एसोसिएट्स, रुडोल्फ एल्बर्ग और एसोसिएट्स जो है उसके जो साथी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला है, who was the prisoner of Zenda and why was he imprisoned? Do you consider Rudolf Alberg the best king of Britannia? Justify your answer with reasons. Compare and contrast the characters of Rudolf Alberg and Black Michael. Give a brief description of the loyalty and wisdom of Colonel Sapt. Events, incidents and other questions. Describe the incident of summer house tea table incident. अच्छा याद रखिएगा, नॉवल में summer house को कंपाउंड वर्ड बना के लिखा है, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कभी कभार इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है और उसके से स्टूडेंट भी इसे अलग अलग करके लिखते हैं। पेपर में आपने इसको कंपाउंड वर्ड बना के ही लिखना है, यानी कि दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाना है। Describe briefly the coronation ceremony of Rudolf Rassendyll. What was the plan behind arranging ball? By whom was it proposed? Describe morganatic marriage with particular reference to the prisoner of Zenda. Describe Jacob's ladder and its purpose.
वैसे इसके अंदर जो डिस्क्राइब ब्रीफली द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रुडोल्फ रेसेंडल है, वो रुडोल्फ रेसेंडल के क्वेश्चंस में जो हमने पूछा हुआ है कोरोनेशन सेरेमनी का, उन दोनों सवालों का आंसर सेम हो सकता है, थोड़ी बहुत उसके अंदर वेरिएशन करनी होगी। चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अच्छा, सेक्शन सी में आपको पता है 3 सवाल आते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस टू। सिर्फ सेक्शन सी है जिसमें थोड़ा सा गेस वर्क किया जा सकता है, कभी कभार वो भी नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको गाइडलाइन देने के लिए कि किस तरह से कौन कौन से हम पहले एसएस की प्रिपरेशन करें। तो आपके सामने एसएस हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, इससे हर साल जो है चूंकि लीग होती है, पीएसएल होती है, तो हर साल के लिहाज से इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके अंदर जो इवेंट्स वगैरह डिस्कस करें वो उस ईयर के लिहाज से करें जिस ईयर आप पेपर दे रहे हैं। जैसे कि अभी वाले स्टूडेंट्स 2022 की करेंगे या 2021 में आई गेस हुआ। प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, दैट्स अ कांस्टेंट प्रॉब्लम और दैट्स अ कांस्टेंट टॉपिक, क्योंकि कराची की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, दे आर नेवर एंडिंग। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा, एक जनरल आपके पास टॉपिक मौजूद है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये ऑन एंड ऑफ आपसे पूछा जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस, इंटरनेट, सेल फोन्स। अच्छा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस जो है ये अमूमन साइंस के बच्चों से ज्यादा पूछा जाता है। इंटरनेट, सेल फोन्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स वगैरह सबसे पूछा जा सकता है। ठीक है। फोर्थ पे हमने लिखा है सोशल मीडिया, इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। फिफ्थ पे लिखा है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और सिक्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, ये ऑन एंड ऑफ कॉमर्स वालों से पूछा जाता है। तो ये कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के साइंस वालों के या आर्ट्स वालों के या दूसरे फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप इसे जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक राह समझ में आ सके कि किस तरह से तैयारी शुरू करनी है। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। खुदा आपको, आपका हामी और नासिर रहे और आपको अच्छे एग्जामिनेशंस देने की तौफीक दे। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, और जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं वो नीचे दे सकते हैं। आपकी कमेंट्स को वैल्यू किया जाता है। चैनल को जरूर देखते रहें और वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो कि पेपर दे रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सर पे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।